So hello everyone, welcome to this video. This is the second video for Mathematics of Finance. In this video, we are going to see how we can calculate present value and future value in MS Excel. Firstly, we will begin with the present value. PV function will be used for calculating the present value of an annuity. As given in the question, we have to calculate the present value of an annuity that pays rupees 200 at the end of each quarter for 10 years. Assuming money to be worth 5% per annum compounded quarterly. सो हमें साल का 5% पर एनम इंटरेस्ट दे रखा है क्वेश्चन में. क्वार्टरली इंटरेस्ट विल बी 5% डिवाइडेड बाय 4. एक साल में अगर 4 क्वार्टर हैं तो हर क्वार्टर 1.25% मिलेगा. इन द क्वेश्चन द नंबर ऑफ ईयर्स इज गिवन टू अस एज 10. तो टोटल पीरियड्स हो गए 4 इंटू 10. अगर साल में 4 बार कंपाउंडिंग हो रही है तो 10 साल में 4 इंटू 10 टाइम्स होगी विच इज़ 40. Total periods will be 40 and the quarterly interest will be 1.25%. Annuity is given to us as 200. Now we have to calculate the present value for the end of each quarter. Just remember, put the minus sign in the starting of the function क्योंकि PV function negative में आंसर देता है. तो for making it positive, just put minus sign in the beginning of the question and apply PV. Firstly, it is asking for rate. It will be the quarterly rate of interest. Secondly, it is asking for number of periods. So total periods will be 40. I'm selecting that. Third thing is PMT. PMT is nothing but its annuity. So select that. उसके बाद वो फ्यूचर वैल्यू मांग रहा है. फ्यूचर वैल्यू इज नॉट गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, सो इट विल बी 0. एंड द लास्ट थिंग इज टाइप. सो 0 विल बी फॉर द एंड ऑफ द पीरियड एंड 1 विल बी फॉर द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड. तो हमें एंड बोला है क्वेश्चन में, सो आई एम सेलेक्टिंग 0 एंड प्रेस एंटर. So I am getting as 6265.39 as present value. So that is how you can calculate the present value in MS Excel. Now we will moving to the future value. FV is the function which is used for calculating future value. So now we will move to the question. Find the future value or amount of an annuity if a payment of rupees 200 is made at the beginning of every month for 3 years at the rate of 15% per annum compounded monthly. तो हमें क्वेश्चन में 15% साल का इंटरेस्ट दे रखा है. सो मंथली इंटरेस्ट विल बी 15% डिवाइडेड बाय 12 एंड द नंबर ऑफ ईयर्स आर 3. सो अगर एक साल में 12 बार कंपाउंडिंग हो रही है तो 3 साल में 36 टाइम्स होगी विच इज़ 3 इंटू 12. एन्युटी इज गिवन टू अस एज 200. सो नाउ आई एम अप्लाइंग FV फॉर कैलकुलेटिंग द फ्यूचर वैल्यू. Firstly, it is asking for rates. I am selecting the monthly rate of interest. Now number of periods will be 36. PMT is 300. Again, present value is not given to us in the question, so it will be 0. And it is beginning of every month, so type will be 1. I pressed enter. So as you can see that it is giving to me answer in the negative. So I am applying minus in the starting of the function. Pressed enter. So this is the future value of this annuity. Thanks for watching this video.